चर्चासत्राच्या दुसऱ्या सत्रात मी सर्व व्यासंगी वक्त्यांचे, रसिक श्रोत्यांचे आणि संगीतप्रेमी विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपण आता द्वितीय सत्राला सुरुवात करतो आहे. या सत्रामध्ये प्रथम डॉक्टर हेमंत देसाई आपल्याशी संवाद साधतील. डॉक्टर हेमंत देसाई हे पद्मभूषण विदुषी अन्नपूर्णा देवी यांचे ज्येष्ठ शिष्य आहेत. अन्नपूर्णा देवी यांच्याकडून त्यांनी पारंपरिक मैहर ध्रुपद शैलीमध्ये सतार वादनाचे धडे घेतले आहेत. तसंच अन्नपूर्णा देवींकडून त्यांनी सूरबहार या वाद्याचं देखील थोडंफार शिक्षण घेतलं आहे. अन्नपूर्णा देवी यांच्याकडे शिकण्यापूर्वी त्यांनी पंडित कार्तिक कुमार यांच्याकडे सतारवादनाचं शिक्षण घेतलं. तसंच बिनकार उस्ताद मोहम्मद खान आणि उस्ताद इम्रत खान यांच्याकडे आणि पंडित रविशंकर यांच्या मुंबईमधील किन्नर स्कूल ऑफ म्युझिक येथेही सतारवादनाचं शिक्षण घेतलं आहे. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी श्रीमती नीलाताई नागपूरकर यांच्याकडे गायनाचंही प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. त्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आणि कम्प्युटर सायन्समध्ये डॉक्टरेट मिळवलेली आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया बर्कले येथे त्यांनी नियंत्रण सिद्धांत आणि गणित विषयाचा अभ्यास केला आहे. सध्या ते त्यांचा वेळ संगीत शिकवणं आणि IT क्षेत्रात सल्लागार म्हणून काम पाहणं यात व्यतीत करतात. आता ऐकूया डॉक्टर हेमंत देसाई यांना. Right off the bat, I would like to thank Pandit Nityanand ji, all the other trustees of Annapurna Devi Foundation, SNDT University Music Department, who have taken the pains to organize this wonderful session, I think. And thank you so much for inviting me to speak here. To begin with, there were some excellent presentations in the morning session. I mean, I have learnt a lot about MAIHAR GHARANA just by sitting here in the morning session. And when Pandit Nityanand ji first asked me to speak, I was not too keen on speaking. He asked me to speak on MAIHAR GHARANA, and my response was that I really don't know too much about MAIHAR GHARANA. If I say anything, I'd have to do research on it, and I'd do research using Google and other people. So I'd rather speak about something which I know about directly, direct knowledge. And he agreed that I can speak on what I had learned from Annapurna Devi. So today I will speak on Annapurna ji, her approach to music, her way of teaching, and what I think distinguishes her style from other styles of music. So with your permission, I'll start that. I've also got my sitar here. It's here primarily for show purposes, but it's also there in case something is not clear and you want me to demonstrate it. But it's already unclear. I can tell you, Sandhya ji has done a superb job in the morning session. I mean, you'll find that what I have to say here is very similar to what she talked about and what Suresh has talked about. So yes, if required, I will certainly demonstrate it. But let's do the talk first. Okay. So this I already told you about. We'll be talking about this. So this is the most important aspect of Annapurna ji. In her own words, संगीत एक साधना है और ये साज जो है वो यंत्र है. Having said this, I don't think I need to say anything more, but we need to speak about it. So she always used to say, रोज प्रैक्टिस करके रख देना. कुछ भी हुआ प्रैक्टिस होना चाहिए. आप पूजा करते हैं, हाँ. आप खाना खाते हैं, हाँ. तो ये पूजा के जैसे है. आप बजाइए
जितना हो सके उतना बजाए, लेकिन रोज बजाना चाहिए. And that was the first promise that she extracted from me when I went to teach her, that never leave sitar. If you have other things, you perform your work, do everything. You may even in between stop for some time if you're not well or if you don't have the time, but never leave it. Come back in it. And that's what I have. I consider myself very fortunate to have gotten it from her, because that has made me. It's not California. It's not Berkeley. It's not electrical engineering. But it's this. So each raga is divine. It's like how you do puja of Shiva or Krishna Bhagavan or Ram. Each raga itself is divine. It has a particular form, and you, after years and years and years of practice, you begin to see the form. But the form is not some visual form which you see. It's the form of the rag. It's the sound form of the rag that you begin to slowly understand. It's not a picture, or it's not some multicolored aspect or some shining things that you see. But slowly you begin to see what is the form of this raga. It becomes you. And that's why it's enough to learn just one rag in your lifetime is more than enough. But we have to know more, because these are the different forms of the divinity. And therefore there are no shortcuts in this. You can't imagine not doing a complete puja. There is a form to this rag. You can't imagine if God created you without a hand or without a finger. Would you like that? No. So same way in this. You do what you have to do and do it right. So most important now, having said this, is that this is your attitude that should pervade everything that you do with your music. Whether you're practicing on your own, whether you're practicing in front of someone, whether you're performing in public, whether you're speaking about it, but this is the basic attitude which must be there at all times. Your seriousness of purpose and your devotion is most important. That is what counts in this entire field, and that is also which may make you into a great musician. So when I started, she told me, आप बजाइए, लेकिन कब होगा वो कोई नहीं बता सकता है. आपकी तकदीर के ऊपर है. आप कैसे बजाएंगे और कब वो आएगा वो कोई नहीं बता सकता है आपको. आप सिर्फ बजाने रहिए. So what does all this mean? Does this mean that you only have to sit at home and do sadhana? You only have to practice? No. You please. She has never told you not to perform. She has never told me not to perform. In fact, she organized my first performance with in Acharya Alauddin Khan Music Circle. But whenever you play and whatever you play, this is the background which is there in your mind when you play. So that's what it means. Unfortunately, that's not the case nowadays at all times. Tayyari is most important. Without tayyari, you can't even do anything. Without tayyari in my voice, I can't even speak here. But tayyari is one aspect of it, and that is the part of the total form of the music. Both Sandhya ji and Mr. Banerjee has touched upon it in the morning, that each instrument is different. Each instrument has a different baj. Vocal baj is different, sarod baj is different, sitar baj is different, violin is different. So just like human beings are different. But so each baj has each instrument has its own baj, and you try to bring out the raga using the strengths and capabilities of that instrument. So when she taught, she would teach in this way. So it's not like just a cheese is given to you, and then no matter which instrument you are playing, you repeat the cheese. और गा के बता दिया काम खत्म हो गया, बजा के बता दिया काम खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. Each instrument has to be learnt in detail to use that instrument, and that takes years and years and years of doing. So now we come to what is it that, now we are only going to talk about sitar. We are not going to talk about anything else. So what is it that distinguishes the MAIHAR sitar?
I mean, there are many other styles of sitar playing, and we are going to talk about within MAIHAR what is Annapurna ji's way of teaching of sitar. And so first thing we have to talk about is the physical characteristics of that instrument. And the most important thing there is how many strings does it have, how do you tune the strings, and the importance of the jod string, that is important. So is this clear? Otherwise I'll have to go through it in detail. 15 strings below in the MAIHAR sitar. These are the 7 strings. Madhyam, Jod, Pancham, Kharaj Sa, Steel Pancham, Small Chikari, Big Chikari. So main string is tuned to Madhyam, Mandra Saptak Madhyam, Sa is the Mandra Saptak Sa, Ati Mandra Pancham, Ati Mandra Kharaj, Mandra Pancham, Sa, and Chikari. So, of course, this tuning we have done for Kalyan Thaat, and it'll change. It can change depending on the rag. For example, if you are playing Madhyam Pradhan rag like Manj Khamaj, which is a famous Madhyam Pradhan rag. It's not. It's a Madhyam Pradhan rag, although it's Khamaj. Or you may be playing Malkos, or you may be playing Bageshri. Then the tuning will change. Instead of there is no Pancham there, the Pancham will change to Madhyam. So we'll do it with this. And even the tarab strings will change depending on the rag that is being played. Now we come to the most important point about MAIHAR sitar, and that is the jod. The jod string is the one that gives you the basic sur, that is the sa. Fortunately, in sitar we have the jod strings. In sarod you don't have a jod string. So you can play sitar without a tanpura also, and it still sounds bharela and it still sounds good. But other instruments which don't have a jod string, you can't do that. So because the jod is there, you have to know how to use that jod also, and you have to incorporate it in your strokes also. The most important thing is that the jod is a fundamental string that sets the sur, basic sur, based on, and as we all know, Indian music is based on it's not a chromatic system, but it's based on although there are all, if you put all the notes together, all the shrutis together, it will cover all the chromatic system as well. But the notes, everything is relating to a fundamental note, which is the sa. Next. So what you should know is here, so because you have all these strings, they're not just for the sake of being there. You have to be able to play on them. And you have to be able to play what is right for them. Again, my tayari is not all that much just now, but you have to be able to play on all of them. And the Kharaj and Pancham are there for primarily for alap purposes and jala purposes. So I should have started in the slow speed and then picked up, but that's the way she teaches. Whatever you play, first play in slow speed, and all the teaching is done only in slow speed. And while you're practicing in that slow speed, concentrate on the tone, concentrate on the accuracy, concentrate on the
overall sound quality of the note. Why do you do this? Because it has to sit in your head. And if you just do fast hand practice, it doesn't sit in your head. Sit in your head means not just physically sit in your head, but the note and the pattern has to be embedded in your head. Once that is done, then you can do whatever you want to do and play whatever you want to play. But if you only practice for taiyari purposes, then the essential qualities of the rag don't seep into your head. So you'll be playing, you'll be moving your fingers. And as you used to say, let the rag determine how your fingers move, not the other way around. And so if you practice only for taiyari, that's what happens. And you can make, you take shortcuts, you make compromises, and nobody can even make out that you've done that. Because it's going so fast. So even you're only looking at the outer form of it, So that is important. And practice for taiyari is different. Once you get this down very slowly with correct accuracy, the way she is satisfied, then she would go in for practice with taiyari. And practice with taiyari is very simple. You start with the base speed and double it. Then double that. Then double that. Keep going. That's your speed. Is as simple as that. So that's not what you start with. Okay. Next. Incidentally, that also tells you what Dugun Lay is all about. And that also sets your lay in order, So important here is that because you have all these strings, you need to be careful what you strike. And main point is that you are striking only that string which is supposed to be struck, on which the note is. Don't just strike all the strings like in a guitar. You're not supposed to. ये सब नहीं जमेगा इधर. Each string has to be struck because it is meant to be struck. And each note is played because it's meant to be played. And you only play the notes on that string. So I think Sandhya did a superb job of that in demonstrating that. Only exception is the jod. We'll come to that later. And there's a second thing that most people, even seasoned musicians, go through, and that is pick up the sitar, kuch idea aaya hai. So try karega. And that is now picking up the fashion also. ऐसा नहीं होता है. जो आइडिया आएगा वो जो सीखा है उसमें से ही आइडिया नया आएगा और उसको बढ़ाना है और उसमें से नया आइडिया आएगा ही. So just to think that I have got a new idea and start going with that and think that this is not done in her style of teaching. Incidentally, this idea thing is very big nowadays, not just in music, it's there in everything. I mean, in the movies, so all creative work means you have to have ideas. Because if you don't have ideas, you're not an artist, you're not in creative work. But this is not just creative work, it's spiritually creative work, So if God has an idea to make another human being, I mean, he won't just say, चलो एक idea आ गया, उसको एक आँख के बिना हम human being बना देंगे, ऐसा तो नहीं होता है. So, sorry to say something, some people may consider it blasphemous, but that's what it is. Okay, so now we have gone through this part of it. Now, what are the basic hand positions? The hands must be rounded like this. Don't spread out your hands. Don't let your hands go out like this. No matter what speed you're playing with, if you have to play kirtans, your hands will spread out. But then the approach would be always to bring them back into a rounded position. And not only your hands and fingers have to be rounded, but your entire arm should be rounded. I mean, there's no point things sticking out. And if you think about what was said in the morning about Drupad is a rounded form of music. There are no jhatkas, matkas, no things that go very rapidly from one to the other. So that is reflected in your physical form also while you are playing. It should be. So the hand should be rounded. What you say should be rounded. What music you play should be rounded. Don't go from one note to another rapidly. All that is incorporated. And the roundedness must be there in both the left hand as well as the right hand.
राइट हैंड ऐसा नहीं बजा सकते, एक उंगली से कभी मत बजाना, दो उंगली से कभी मत बजाना, पूरा हाथ से पूरी उंगली घूमनी चाहिए. Why is all this? Just for the sake of saying it? No. Because with this, your tone becomes different. The balance in your playing becomes different. And even physically, if your hands are stretched all the time while you're playing, it's a far better, far more stretch on your muscles and far more stress and strain on your muscles while you're playing and your tendons. So it's even a more efficient way of playing. So this is her basic. So all, believe it or not, I used to, as you have heard, I had learned from several people, and my hands were going all over the place. So I spent a year with her. So first fundamental thing, you have to forget everything that you have learned, and you start fresh with me. So okay, I really wanted to learn, so there's no question about denying that. First thing she did was, for 1 year, tied my hands with rubber bands. Tight rubber bands, and just play. At this speed, with rubber bands tied tightly, no faster. Not just for the per to go, but also all the muchanas and all the hand practices. So if you do it this way, then all your past habits do go away. They vanish. And you are reprogrammed to play in her style. Let us, in today's technology world, that sense will make more sense, So that is her. If you have come from another gharana, or if you learn from many other people, then you first forget everything else, because otherwise it's not possible for you. It's not possible for you to play what she tells you to play. And I think some people here who are playing sitar will vouch for that, if he's still there. I don't know. I have had students who came to me to learn sitar, and he was not used to thinking in these terms. His hand was great. I mean, he had some surs in his command also. He had a great speed. He had practiced only for Tayari. But when I told him to play these alap phrases of Annapurna Devi, he just couldn't do it. Because he told me then that the way my mind is used to thinking is I am not used to thinking of the music in this way. I am not used to thinking in these terms. So then we gave up in frustration, because I didn't put him through this routine. If I had put him through this routine for 1 to 1.5 years, he would have forgotten everything else and come in this way. But that's why Annapurnaji insists on doing it this way. Next we come to the strokes. A lot of times you find that the strokes are haphazard, dar, 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 da, aisa nahi, da, 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 da. Both da and ra are equal strokes. Then da is with main string and jod. Jod has to sound. And ra is only main string. So dara will be da with main string and ra only, da with both strings and ra only main string. Not this. All the strings are striking. No. Da, the jod should sound only on the da stroke. Okay. No matter what speed you play at, ra
only on the main string. And I think Sarod people would be quite familiar with that. They have to play only on one string and they have to strike only that string. But it's easy to lose track of and lose control on the sitar. And of course, there's diri. So diri is... This is diri. So on the da stroke, the jod string sounds. On the diri strokes, only the main string sounds. So this is the basic training that you go through before starting any rag. And you do all this because you want a certain tonal quality. You don't want to fill the entire sound with jhankar. All this should be avoided. So what is it that you play with all these strokes and all that? Well, this I'm sure most of you will be familiar. She starts off only in Kalyan Thaat, and the first thing you play is Murchanas, per to per and back again. Like that, and so what do you get out of playing these murchanas? Again, couple of things. One is your hand gets used to what does an octave sounds like. 8, what does you play it with tal, so you know what does 8 bowls sound like, and all that forms an impression in your mind about so that you can use it while you're actually playing the music. And there are 3 different murchanas. One is this one. This is the second murchana. The third one. Yeah. 3 murchana, 3 different types of murchanas. Paltas, bowls and jala. So paltas basically 3, 4, 5, 6 and 7. There are lots of people who teach many different kinds of paltas. They can go on and on and on in paltas. In fact, you can have an entire course on paltas. But she teaches these basic 3 paltas, 3, 4, 5, 6, 7 paltas. And explicitly she told me this, that हम ऐसे ही सिखाएंगे आपको, जो भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बजाना होगा तो तान में बजाइए आप. Everyone wants, do you want me to go through all these? If you, okay, then 4 everyone will know, 5, 6 and 7.
Kirtans, these are all parts of the MAIHAR GHARANA tradition, which both Sandhya ji and everyone else. So gamak, this is gamak, and that is the same when you practice fast. So you finish this. And practice of taiyar is precisely this. Whatever you play at the base speed, then double the speed. But every time you double, it must be clear and must sound good. Not you can't gloss over it. Like I don't even know how to play that, but many people, if you hear, they play at such resound, at such a fast speed, but you can't hear the individual notes at all. It's just the hand is moving. It's like a sitar gym instead of a sitar program. So this is basic hand practice, and what she taught in hand practice. Then she will teach you each raga, and in each raga, she will teach you in exactly the same way in which you would perform it. So everything is in the sequence. It's not that एक चीज़ दे दिया फिर थोड़े देर के बाद आया फिर दूसरा चीज़ दे दिया, ऐसा नहीं. If you sit and play a rag in performance, then what is the sequence in which you will play? Each alap is taught in detail. Each jod phrase is taught in detail. And you have to play it to her complete satisfaction until it sits in your head and you know it, you have internalized it. It's not like you are sitting and imitating someone. A lot of people, when they teach, and particularly if you learn from YouTube, lots of people learn from YouTube, is that you see someone playing, you see the hand movement and you pick that up. But inside of that, what is going on, you will never be able to get because you have not done it yourself. If you do it yourself, then you will know the insides and outs of it, and you will know how to do it and what has to be done. If you're just imitating, it's an imitation. एक कान से आया, दूसरे कान से निकल गया, या तो हाथ से निकल गया. Matter ends. And it's not even the correct thing that you may be playing. There are a lot of compromises that you do while you're imitating. And because it's easy to do on a sitar, because the sitar has got frets, the sitar has got, as opposed to sarod. Sarod doesn't have frets, violin doesn't have frets. So it's not that you have to have at least some basic idea of sur before you start imitating something on sarod or violin. But on sitar, you don't even have to know that. You just look at what the hand is going and you play it. And you think you're doing it and you think you're doing it well, but really you can't do anything else. And what you're doing is also not right. Now, each alap she used to teach.
that's the alap. Each note has to, of the rag, which are the notes where you wait, which are the notes where, which you show. In Yaman, of course, Ni, we all know, is the most important note. Pancham is the place for waiting. So you wait at the right notes, for the right amount of time, you show those notes and use those other notes to really bring out those notes, So her entire alap for every rag is like this, And there is no need to hurry, as Sandhya ji says. There is no need to rush through things and play. These are the differences. Now, the reason that happened is because I was not clear in my mind what I was going to play. So sometimes when you lose that concentration, your finger can slip. So that also shows the importance of why everything has to be clear in your mind when you are playing. Okay. Slips happen, mistakes happen, but they happen because your mind is not on it at all times. So important point about MAIHAR Gharana is, at least the way she taught me, is that each alap you start with sa, each alap. Don't start in between, because that's the basic sur of and when you wind up an alap, don't keep on going off to infinity. Finish an alap, do an alap, show what alap you're doing, and wind it. Wind it up, and when you wind it up, it's called the mora. This is the way we wind up each alap. Different gharanas have different moras for winding up an alap. They have very long moras, but we have a pretty short mora. So I think we have been through all of this. Pancham and Jod things.
So, without the Pancham, Kharaj Pancham and Kharaj Sa strings, you really can't play the alap. It's not a technical point. That's the strength of the MAIHAR Gharana. And best alap comes out on those strings, as does the Jod. So I think that is one point that we need to understand. There are Gharanas that don't have that. And they tune their sitars differently. But they say they are playing alap. Yes, you are playing alap. But this is the real alap as far as we are concerned. The mohara, what note you play? Sa, chick, chick, sani, sa, nire, ni, sa. So each alap has to be resolved. It has to come to its end. Then you start the next alap. You can't just keep going from one alap to another. And please start with sa. I mean, a lot of people, they'll start, say, you're playing Yaman. First, they start with Chikari, which is totally not the done thing. Is not done in our Gharana. So after the Jod is, okay, let's go back the previous slide, please. So this is Jod, and this is the speed for the Jod. 1, and this is the life for the Jod also. 1, 2, 1, 2. This is the basic life for the Jod. Then you can play fast. And Jod is primarily only Da stroke. So
this is played in Jod also. And there's been some controversy regarding can you play, in Jod, I've been taught that you can also play tihais and you can also play tans, and you have to play according to the trital. Yes, you can do that. So what is the tal of Jod? I checked, when I was told this, I checked with Annapurna ji that is there any tal in Jod? And she explicitly told me, Jod ka ek, do, ek, do, ek, do. This is the tal for Jod. Yes, if you want, you can play an entire tan in Jod. Yes, if you want, you can play tihais in Jod. And if you want to come on some in tihai in Jod, then you just have to come on the one. But up to now, I have not heard either Pandit Ravi Shankar ji or Ali Akbar Khan Sahab or any of the big stalwarts of MAIHAR Gharana playing Jod with, say, Trital or Ektal, but without the tabla. I have never heard that. He has taught us. He has taught us with Pakhwat. Generally in Jod portion, it is being played with Chautal. The Jod style. Okay, so that must be allowed in Khan Sahab style. Yeah, that is the style. I mean, actually, Roviji also played. Several recordings are available. Oh, okay. Of course, in Chautal. And what happens when there was no chikari in sitar, like in Jaipur style? What happened? How would have they played the jod and all these things? I have no idea. There's no You yeah. have to hear Barkatullah Khan's record. Okay. It's probably available in YouTube. It's fine. Okay. Yeah, great. Because Okay. Chikari was introduced only in the 19th century. I see. Okay. But we are talking about today's music, no? Yeah, so that's why, I mean, that's also an important aspect, I mean, to discuss. Okay. But Alauddin Khan Sahab has himself played Jod in various tals. I mean, he taught him, we never heard him. But, No, but recording, some recordings or something. We learned in that way. This is the way we've been taught. And after hearing this, I checked with her again. And she again told me, ek, do, ek, do. वो तो है, लेकिन जो जोड़ बजते हैं पखवाज के साथ तो चौताल में होता है। वो ना सितार पखवाज के साथ बजाते थे? अच्छा। रवि जी तो बहुत सारे हैं, कुंडी तो लाइन का एक है, छाया तो लाइन में रिकॉर्डिंग है। My history stands to be corrected. बोल So this is the bowl which is played at the end of every jod and thokja. Mora is played in Thokjala also. So this is the Thokjala. So I think we have covered most of it, you know.
let's go fast now. This is it. So then, of course, each you play Vistar. When you start off with the Gat usually starts with a Vistar. In the Gat itself, you play. It's like an alap, but you play with tal and you wind up with proper tihais, like how you do it in khayals. You wind up with proper tihais and then pick up the mukrar of the Gat. You know? यहाँ लय से अलग हो जाने का ऐसा. So pick up. You play the Gat, various, and each note again you elaborate on it with a Vistar, you know. After that, of course, there are chans. Chans are important here, and she used to teach chans 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So in the three, if you're playing in trital, per matra you get in 3 notes, you know. And Saat ka chand also is there, 7 notes chand. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. So all of those you can have tans based on that, you can have todas based on that. So all of those are elaborated on during the performance. As Sandhya ji pointed out, there is a lot of the compositions are quite complex. So there's the Jamjama and Krintan, and all of that is part of the Gat. Okay. And the entire performance should be full of meaned, should be full. It should not sound one-dimensional. The whole point is that one way of practicing is that you only pick up a tan and just keep going on and on in that tan. Or you pick up, you get tayari only in certain tans. Certain tans you play, then you make tihais based on those tans, you make other things, break up the tan, do that. That is one way of playing. And with that you can get immense speed. But in the tan, if you have to incorporate jamjama, if you have to incorporate meend, if you have to incorporate some bowls, then the whole picture changes. You can't get that kind of speed in the tan, you know. And that is what she wanted, that everything you play should be rich. It should not be one-dimensional. Her way of teaching, Sandhya ji has already spoken about, so I won't speak much on that. So she used to teach by singing and by telling you how to da da diri da 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 diri diri da 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 diri da da da. So you're supposed to be, all the bowls are taught, all the notes are there in the while she says only, and you pick up that and play that. Importance of this is that you don't imitate anything. You have to know all the intricacies. You have to understand the intricacies and pick it up and play it. That's the only way that you will be able to really internalize the music.
The important point here is that makes you produce the music yourself. You have to produce the music. By listening to her, by hearing her singing, by knowing what she means, you have to internalize it and play it. That's the way, so that's the approach by which you build up your own style instead of just an imitation style. Oh, there are some important points here. There are some important points here which I would like to talk about. Just 2 minutes. 2 points I think we need to talk about. One is chikari, use of chikari, and the other one is andolan and use of andolan. So chikari, you don't start a phrase with a chikari. You end a phrase with a chikari, or you give a chikari as a filler in between. But if you start the phrase with a chikari, then the sound gets lost in the chikari itself, We are not starting with the chikari, so you don't do. In our gharana, this doesn't make any sense, playing in this way. Start a phrase precisely, properly, without chikari, strike the string first, and then use the chikari as a filler. Second important thing is that we need to talk about andolans. So take an andolan before you transition to the next phrase. But the way you transition is you come back, first you must touch the note. This note must be heard clearly. No andolan. No andolan. Now andolan. So take the andolan, come back to the note which you are on, and then transition to the next note. So these are some techniques which are imbibed into you, and that's what brings the whole tonal quality and the seriousness and the depth into the music. So you have to, all this you can read about. There's nothing much to demonstrate here. The last point here is important, that in alap, if you can play an alap without using any strokes at all, it's the best. But you can't do that. So you use as few strokes as possible, very few strokes. It should be, sound must be continuous and rounded. This I'm sure Nityanand ji will vouch for, and everyone else who's learned from her, that when you start playing the first phrase that you play, you have to capture the attention. It should say something. It should not just be a combination of notes. And it should be true to the rag. I mean, you should be able to make out that, ये तो यमन बजा रहा है, ये तो भागेश्वरी बजा रहा है, ये तो मियाँ मल्हार बजा रहा है. You should be able to you should use that combination of notes and properly, so that it brings out the characteristic of the rag, Then you do a detailed elaboration of every note, This is another one that some of my students found really great difficulty in, that a lot of our phrases are complex, even in alap, where one phrase is embedded into another phrase, And every part of it should be audible. You can't play. No. This is an important point of Annapurna ji's insistence, that when you play sapat tans should dana dana ki taan honi chahiye. I mean, it should not be हाथ घिस के लिया और राइट हैंड एकदम जोर स्पीड से बहुत फास्ट बजा लिया और हाथ लेफ्ट हैंड घिस गया और तान निकल गया. सिर्फ
तबले के ऊपर ध्यान रखने का और राइट हैंड के ऊपर ध्यान रखने का, ऐसा नहीं जमता है ये. Jala, I think this is the last point I'll just demonstrate. Her Jala and Sandhya brought this out very clearly. The left hand does its work and the right hand does its work. So left hand is doing alap, actually is playing something like alap and a lot of mind work in there, and the right hand is playing Jala. No emphasis on speed. Sometimes you might have to play 8 strokes because the left hand is doing its work. It is not like... Not like that. So I think you understood the speed is not for, the emphasis is not on speed, but playing all the notes in a rounded way so that you're playing meend with the left hand and Jala with the right hand, and sometimes each meend can take several notes. So you should not rush over those notes. I think some people will tell you how difficult it is to do that, because so emphasis should be on sur and bhav. Emphasis should be on a total rendition of the rag. Emphasis should be on bringing out the entire quality of the rag, an entire form of the rag. And it should not be a one-dimensional performance where you are performing under very ferocious speeds and very fast tabla, and very loud sound. I mean, I'm sure many people have learned to play with, nowadays a lot of people play with one tabla, 2 tablas, 1 tabla, 1 pakhavaj, sawal jawab. All that is great for entertainment purposes, but from her point of view, what is required is this, So sorry if I have bored you and overstepped my time considerably. Huh? Sorry? No, and my hands require to be heated, warmed up, Yeah, I did that. Yeah, you are absolutely right. I mean, these are guitar pegs that are fixed on top, but they're fixed as an extension. So if I ever want to remove them, I just remove these. They are just separate wooden pieces which are shaped and then screwed onto that, and they're screwed on only into exact spaces where the original pegs were. So I can remove them and then revert back to whatever I want to. But the reason I've done this is because it really helps in tuning. I mean, It stays there also. It stays there, it helps in tuning, and you can get a really fine tuning with that, Can I have a look later on? Yeah, sure, you're most welcome. The guy who did it for me lives in Mumbai only, Manish. Oh, I know him. I know him. Tell him to do it for you. He did a great job. You do play. Yes, of course you play.
But in the Drupa, here I have not mentioned it, you are 100% correct. Of course you play Murki, and particularly if you are playing Thumri or a lighter rag, of course you will play Murki. But since we whole focus is, just now we have been talking about Drupad, and she of course she teaches Murki, you know, but if you think about it, the Drupad way of taking a Murki is just a slow version of that Murki. This is the Drupad version of it, and this is the Murki version of it. Drupad version. All this vanishes in Murki. This is not a Murki. None of these are Murkis. But of course you play Murkis, and of course she never stopped you from playing Murkis, but depends on what you're playing and what is the effect that you want to create. Of course you play Murkis. Murkis are the Krintans. Krintans are a Krintanic form of Murkis. Yeah, I'll show it to you later on. Let the thing proceed. Sorry, Nityanand. Most sorry. Sorry about that. आजच्या पिढीतील आघाडीचे बासरीवादक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रूपक कुलकर्णी यांचं शिक्षण पहिल्यांदा त्यांचे वडील पंडित मल्हारराव कुलकर्णी यांच्याकडे झालं. त्यानंतरचं त्यांचं शिक्षण मैहर घराण्याच्या प्रसिद्ध सूरबहार वादक विदुषी मा अन्नपूर्णा देवी यांचे शिष्य पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांच्याकडे झाले. बासरीवादनाच्या कारकिर्दीमधील स्वतंत्र बासरीवादनाचा जाहीर कार्यक्रम त्यांनी दरबार हॉल बडोदा येथे वयाच्या 11व्या वर्षी केला. ते आकाशवाणी आणि दूरदर्शनचे अश्रेणीचे कलाकार आहेत. त्यांनी दरबार फेस्टिवल UK, एशियन सुपर फ्लुटिस्ट फेस्टिवल जपान, तानसेन समारोह, विष्णू दिगंबर पलुस्कर समारोह, हरवल्लभ म्युझिक फेस्टिवल या आणि अशाच नावाजलेल्या संगीत समारोहामध्ये त्यांनी आपली कला सादर केली आहे. पुणे येथील चिन्मय विश्वविद्यापीठाच्या बासरीच्या विभागाचे ते मुख्य आहेत. त्यांचे अनेक अल्बम्स रिलीज झाले आहेत. तसंच बॉलिवूड आणि हॉलिवूड चित्रपटांच्या पार्श्वसंगीतासाठी त्यांनी वादन केलेलं आहे. पन्नालाल घोष पुरस्कार आणि भवन्स मुंबई यांच्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या संगीत प्रकाश या पुरस्काराने ते सन्मानित झालेले आहेत. नवीन पिढीतून अनेक शिष्य ते आज तयार करीत आहेत. तर ऐकूया पंडित रूपक कुलकर्णी यांचे अनुभवाचे बोल. प्रारंभ करने से पहले हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, समझते हैं और उसको किस पद्धति से सरगम का अभ्यास करना है, आरोह अवरोह, और उसमें कहाँ रुकाव होना चाहिए, कहाँ वादी है, कहाँ संवादी है, उसका विचार करना चाहिए. तो उसको करने के लिए हम शुरू में थोड़ा आलाप बजाते हैं. कोई भी राग, चाहे खदमाज हो और चाहे दरबारी हो, आलाप बजाते हैं. खदमाज राग थोड़ा चंचल प्रकृति का है तो इसके में शॉर्ट आलाप बजाते हैं. लेकिन दरबारी जितना देर आप बजाएंगे आलाप उतना ही आपको आनंद मिलेगा. ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना आलाप सीखा हुआ है, किस पद्धति से सीखा हुआ है, क्या आलम से सीखा हुआ है, या उसको
शास्त्रीय संगीत के हिसाब से वोकल गायन या वादन शैली में सीखा हुआ है, तो ज़्यादातर देखेंगे ध्रुपद शैली है, जो कि वाद्य यंत्र में अभी तक किसी ने नहीं बजाया। लेकिन जो गायक है वो उसको पहले आलाप करते हैं और आलाप अच्छी तरीके से राग के हिसाब से, और जो खम्माज वगैरह तो गाते भी नहीं ध्रुपद शैली वाले। तो जो खम्माज राग है उसको शॉर्ट करके गा के, और ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं ऐसे राग जो लाइट प्रकृति के होते हैं। किंतु ऐसे राग जैसे यमन हुआ या मालकौंस हुआ या दरबारी हुआ, इसका पूरा जो चेहरा है, पूरा रूप है, उसको आलाप और जोड़ करके किसी ताल का डिस्टर्बेंस न लेके उसको अच्छी तरीके से गाते हैं। और जब अस्थाई शुरू करते हैं तब वो पखावज में शुरू करते हैं, अस्थाई अंतरा थोड़ा सा जोड़ता करते हैं बस, ज़्यादा उनका आलाप और जोड़ से ज़्यादा संबंध होता है। तो इसलिए आलाप जोड़ ध्रुपद अंग से की शैली से आया, जो हम वाद्य में उसकी नकल करते हैं, वो ध्रुपद अंग से आया। तो इसलिए मैं गुरु माँ से जब सीखा तब से मुझे आलाप और जोड़ का एक शैली का अच्छा दर्शन हुआ और अच्छी तरीके से बजाने लगा। तो आलाप जोड़ को हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिया और सभी लोगों को बांसुरी अच्छी लगने लगी, और उसके शब्द को, उसके ध्वनि को आलाप और जोड़ में ज़्यादा अपनाने लगे और ज़्यादा सुंदर लगने लगा, क्योंकि उसमें कोई ताल का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। फिर जब अस्थाई शुरू किया तो अस्थाई से फिर ताल शुरू हुआ, तान शुरू हुआ, और उसके बाद ज़्यादा उझाला वाला नहीं करते थे। तो उस शैली को मैंने एडॉप्ट किया और अभी तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसलिए हमारा साउथ, हमारा बजाना भिन्न लगता है। झाला वगैरह क्योंकि सितार, सरोद और या दूसरा कोई तार का वाद्य हो, इसमें लोगों ने बजाना शुरू किया था जोड़ को, तो उनके लिए तो बहुत सुंदर लगता था। उसके बाद हासिल को सुंदर नहीं लगता था, लेकिन हमने उसको इस तरीके सुंदरता को बनाने के लिए अपने हिसाब से जोड़ का एक रूप अलग किया और झाला भी किया उसमें, और लोगों को अच्छा लगने लगा। उसको किस तरीके से उसका सुंदर दर्शन होना चाहिए राग का। जब तबला आता है तो उसमें हम उसमें क्या करते हैं, अस्थाई अंतरा ये तो कंपोज होता है, और उसमें से हम तान के अलग अलग प्रकार जो वोकल वाले, ख्याल अंग वाले अच्छा करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। और बात एक इंस्ट्रूमेंट का अलग साउंड होता है, उसका अलग एक रूप होता है, वो हर इंस्ट्रूमेंट की अलग तालीम होती है, और वोकल की तालों को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं पर निर्भर तार के वाद्य। तो हमारे वाद्य में स्पेशली या सारंगी में या बांसुरी में या और जैसे दिलरुबा तान जो वोकल वाले गाते हैं वही अच्छा लगता है, वही हम फॉलो करते हैं और उसकी हम बढ़त करते हैं, और बढ़त करके समय के हिसाब से हम उसको जितना वाद्य की सुंदरता, उसका साउंड का सुंदरता, उसके पास बजाने की सुंदरता को बहुत ध्यान में रखते हैं और बजाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। वहाँ के लोग वादन शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित है, घराने ख्याल को नहीं, लेकिन वादन शैली को। और वादन शैली में ताल का बहुत महत्व है,
उसके बुगल के हिसाब से हम अस्थाई फिट करते हैं, ताकि उसका जो बुगल है उसके साथ में अस्थाई की शब्द, अस्थाई के स्वर जो भी हो सुंदर लगे, और सब जब है तो लगे कि वाह ये देखो यहाँ सब होना चाहिए, शब्द चाहे कुछ भी हो, स्वर चाहे कुछ भी हो। और उसके अलावा जो द्रुत होता है उसको हम किस तरीके तबले के साथ मिल के चलते हैं, चाहे वो बहुत ही द्रुत हो और चाहे मध्य लेवल। तो इसलिए वाद्य की और तबले की सुंदरता बढ़ती है। तो मैंने गुरु जी को पूछा था कि आप जो आलाप जो करते हैं तो आप शुरू से करते हैं या पहले कहीं सीखे थे? तो कि नहीं, ये सब देन माझी की है। और माझी ने मुझे विधिवत सिखाया कि आलाप कैसे होना चाहिए, उसकी खूबियाँ क्या है। तो सबसे पहले खूबी आलाप की ये है कि ठहराव, पॉजेस, ये नहीं कि बहुत हम ज़्यादा फास्ट बजाए, बहुत मतलब जैसे संध्या जी ने बताया, हेमंत जी ने बताया कि बहुत इत्मीनान से सब होना चाहिए। और मैं भी मेरे शिष्यों को ये कहता कि आपको 5 मिनट भी अगर बजाना है कहीं भी, तो भी शुरुआत का सा एकदम इत्मीनान से होना चाहिए, तो उसके आगे सब अच्छा हो जाता है। क्योंकि शुरुआत का सा एक मेडिटेशन होता है, उसके भीतर हम पूरा कॉन्सेंट्रेट होके आगे अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो ये मेरी भी सोच यही है कि जब भी हम बजाए, चाहे 5 मिनट बजाए या 1 घंटा या 2 घंटा, शुरू में सा बहुत अच्छे से लगना चाहिए। और उसके लिए ये जो पहला 20-30 सेकंड का जो सा है वो अच्छे से शुरू में करने के लिए उसके पीछे 10 घंटे का रियाज होना चाहिए, तो वो 30 सेकंड बच पाएगा अच्छे से। और मैंने जब शुरू किया बांसुरी सीखना मेरे गुरुजी से, पहले तो टेक्निक तो मुझे वैसे मेरे पिताजी ने सिखाई थी, तो मुझे इतना कठिन नहीं होगा कि गुरुजी क्या बजाना चाह रहे हैं, क्या कौन से स्वर, कौन सी स्वर पंक्तियाँ या स्वर संगति वो कौन सी स्वर संगति वो किस राग में कैसे बजा है, क्योंकि पिताजी ने सब मुझे मेरा बेसिक पूरा तैयार किया था। मगर उसके बाद जो बेसिक है, जो टेक्निक के बाद में जो शुरू होता है वो संगीत, तो वो संगीत मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। अच्छे से इसमें मैं कह रहा हूँ कि हर एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा देखता है, वो नहीं कहता कि मैं तुम्हारी परीक्षा देखूंगा। मगर मुझे पता चला, अभी पता चल रहा है इस उम्र में आके कि ऐसे उन्होंने क्यों किया था। क्योंकि जब पहले 5 साल में उनके पास गया, सिर्फ भैरवी का रियाज वो करवाते थे, सिर्फ भैरवी सिखाते थे पहले 5 साल। उसके बाद 3 साल तोड़ी और फिर 2 साल यमन करवाया। तो पहले 10 साल बहुत अच्छे से मेरा ये जो मतलब जो मैहर घराना का जो आलापचारी का जो नींव है वो उसमें सब आ गया था। और चूँकि बांसुरी में कुछ तार या कुछ नहीं है, चिकारी या तरफे नहीं है, तो उस अंग को, ध्रुपद अंग शैली या बीनकारी अंग को हम बांसुरी में कैसे बजाएं, तो उन्होंने वो बहुत अच्छे से मुझसे करवा गया। और मेरे ख्याल से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये 5 साल 3 साल 2 साल वो सिर्फ मेरे ऊपर ही उन्होंने मुझे ही सिखाया और किसी को नहीं सिखाया। क्योंकि मेरे बाद में जितने भी आते थे उनको अलग राग सिखाते थे, मगर मैं जब भी जाता था, हर संगे जाता था, वही कहते थे कि इसको ही करना है भैरवी को, और यही आखिर दिन तक यही राग करना है भैरवी। आज तक अभी भी हम मतलब मैं सुबह जब भी उठता हूँ रियाज़ करता हूँ तो 2 घंटा भैरवी का रियाज़ करता हूँ, और उसमें से एक से 1.5 घंटा सिर्फ खर्च का सानी ध को। तो इससे पूरी मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि पूरी हमारी बुद्धि ओपन हो जाती है, जो भी हम बजाना चाहते हैं वो अपने आप सब खुल जाता है। मैंने कभी अलंकार का प्रैक्टिस नहीं किया, कभी प्रज्ञा नहीं किए, जो भी किया भैरवी किया और फिर राग के बारे में चिंतन करके वो राग को बजाता हूँ। और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि उसके बाद मुझे गुरुजी ने एक गुरुपूर्णिमा के दिन मुझे बताया कि तुम माँ जी के पास जाओ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो गिफ्ट कुछ लेके जाओ और उनसे थोड़ा सा सीख लो।
तो 2 बार मेरा ऐसा मौका आया उनके पास गया मैं। तो पहली बार गए तब संध्या जी भी थी वहाँ। तो मुझे अभी भी याद है, मैं और राकेश हम दोनों गए थे। सिर्फ 4 घंटे उन्होंने यमन का सानिध्य पोमा किया है और इसमें इतने वेरिएशन आ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा दिखाऊँ तो यमन में उन्होंने कैसे कुछ आलाप करवाए थे। और उसके बाद मैं जोड़ पे आऊँगा, जो गुरुजी ने जोड़ अंक का जो बहुत प्रभावी उपयोग किया है बांसुरी वादन में, जोड़ झारा। तो बिना चिकारी, बिना तरफे का झारा कैसे बच सकता है बांसुरी में, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। माझ्या घरामध्ये बासरीची एक खूप वेगळी परंपरा आहे। पंडित पन्नालाल घोष यांनी जी सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर माझे गुरुजी पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांनी ती खूप उच्च स्थानी नेऊन ठेवली। आणि त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी ध्रुपद अंगाचा आलाप जो झाला हे बासरीमध्ये त्यांनी सादर करायला सुरुवात केली आणि ती कला त्यांना विदुषी मा अन्नपूर्णा देवी यांनी शिकवली। आणि त्याच्यामध्ये खास वैशिष्ट्य ह्या बासरी वादनाचं असं आहे की जो आलाप असतो तो त्याच्यामध्ये खूप ठहराव असतो, खूप पॉजेस असतात आणि खूप शांतपणे त्याची भेट होत असते। तर सुरुवातीला सप्तगती मंद सप्तकापासून मग मध्य सप्तक, मग ताल सप्तक असे घेऊन आलापाची निर्मिती होते। आलापाच्या वेगवेगळ्या फ्रेजेस होतात आणि त्याच्यानंतर जोड अंक जे तबला व्यतिरिक्त असतात पण 4-4 मात्रेचा ते एक संच असतो, त्याच्यामध्ये आम्ही वाजवतो। आणि त्याच्यानंतर जसं सतारीमध्ये चिकारी असते किंवा तरफा असतात ते झाडासाठी जे अत्यंत उपयोगी आहे ते बासरीमध्ये नसतात आणि त्यासाठी आम्ही बोटांचा आणि थोडंसं जिभेचा किंवा इथून जे प्रेशर येतं हवेचं प्रेशर त्याचा आम्ही उपयोग करतो। जसं टक 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 असं आहे किंवा ख ख फ ख याचा आम्ही उपयोग करतो। आणि मग जेव्हा तबला सुरू होतो तेव्हा परत एक आलाप आणि तानाचं मिश्रण असतं। त्याच्यानंतर दुगुणची तान, मग तिळी, मग चौगुण अशा वेगवेगळ्या ताना आम्ही वाजवतो। आणि त्याच्यानंतर छंद आम्ही घेतो, म्हणजे एक 7 मात्रामध्ये 10 मात्रा किंवा 7 मात्रामध्ये 5 मात्रा किंवा 3 तान 16 मात्रा किंवा 14 मात्रा असं आम्ही वेगवेगळ्या तऱ्हेने आम्ही सादरीकरण करतो। पुन्हा असं चित्र एका रागाचं तयार होतं। नंतर पंडित दिशारी चक्रवर्ती यांचे विचार आपण ऐकणार आहोत। क्योंकि मैं कलकत्ता में रहता था तो वो लोग जब मैहर जाते थे मैं उनके साथ मैहर भी जाता था। तो स्लोली क्या हुआ, मैहर मेरा सेकंड होम टाउन बन गया और मैं बहुत ज़्यादा मैहर बैंड के साथ भी जुड़ा हुआ था। बिकॉज जुबिदा खान जो है, मतलब अलीब खान साहब के पहला वाइफ, वो चाहते थे कि मैं मैहर बैंड के भी जितने भी कंपोजिशंस है वो सब भी सीखूँ और जो यंत्र है उसके ऊपर भी थोड़ा शोध वगैरह करूँ। तो मैं शुरुआत से थोड़ा ब्रीफिंग कर रहा हूँ आपको, थोड़ा आगे जाएंगे, नेक्स्ट पेज। या हाउ इट स्टार्टेड। तो मैंने ओरिजिनली जो है मैं वोकल सीखा मैंने मेरे माता से। सो उसके बाद क्या हुआ, मेरा 4 साल की उम्र में थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो गया। सो मदर ने इसीलिए सोचा कि अभी तो वोकल नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मुझे इंस्ट्रूमेंट में दिया। तो वो चाहते थे मैं सरोद सीखूं और मैहर घराने से ही सीखूं। लेकिन मुझे शिव जी का मैं प्रोग्राम सुनने जाता था जब 4 साल की उम्र में, तो उनका बहुत अच्छा लगा सुन के। तो उसके बाद मैं ये तैयार किया मन में कि मुझे संतूरी सीखना था। तो मेरे फादर ने माँ को समझाया और बोला कि मैं उसको संतूरी सिखाऊंगा। एंड ही मतलब उन्होंने शिव जी से बात भी कर लिया था। तो हम लोग मुंबई आने वाले थे, लेकिन उस समय माँ ने बोला कि एक बार आप कोशिश करो कि अगर मैहर घराने के कोई मतलब घर के हो, मतलब जो उनके वंशज हो अलाउद्दीन खान के, तो उनसे अगर सीख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा ज़्यादा। लेकिन जब हम लोगों को धनेश खान जी के बारे में पता चला और हम लोग गए उनके पास, उन्होंने सीधा मना कर दिया था। क्योंकि अलाउद्दीन खान साहब जितने भी साल तक जीवित रहे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सारे उनके समय पे इंट्रोड्यूस हो गया था कि कैसे बजाना है, उसका तरीका क्या होगा, पकड़ने का तरीका क्या होगा, स्ट्रिंग्स क्या होगा, ये होगा। जो भी डेवलपमेंट था उनके जीवित काल में हुआ था। तो संतूर जो है वो उनके गुजर जाने के बाद इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए उन लोगों ने मना कर दिया था उस समय शुरू में। फिर माँ ने बहुत रिक्वेस्ट किया और बहुत ज़िद्दी थे वो, और लेकिन मतलब उसके बावजूद भी मतलब जब वो उनका हट था बेसिकली, तो इसलिए गुरुजी ने बोला ठीक है हम देखते हैं,
लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वो सही होगा कि नहीं होगा। मतलब एक चांसेस ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्क रह जाएगा। अगर नहीं बजा तो हमारा जिम्मेदारी नहीं रहेगा, ये रिस्क आप ले रहे हो तो ले सकते हो। तो ऐसा करके मतलब डिस्करेज किया था शुरू में। सो आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब बीच में वो 6 महीना मैं सिर्फ क्लासेस में जाता था, बैठा रहता था, सब बाकी गुरु भाई को सुनते थे बस, और आ जाता था। मेरे पास संतूर था, लेकिन उसको बजाने का मतलब मना था बजाना, सिर्फ उसको देख सकते हो, इतना ही था। आफ्टर दैट 6 महीना उन्होंने, उस बीच में उन्होंने जो किया, मैंने वो सारे डिटेल्स थोड़ा बहुत मैंने वो आर्टिकल्स में दिया है कि उन्होंने माइहर बैंड में उस समय जो बैंड मास्टर थे झूलेलाल जी, वो नल तरंग बजाते थे कि दिस इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट जो 2 स्टिक से बजाया जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है संतूर और नल तरंग में? नल तरंग का लोहे का पाइप होता है, तो उसमें जब स्ट्रोक होता है उसमें कंपन नहीं होता। लेकिन संतूर का जब भी स्ट्रिंग में स्ट्रोक होता है उसमें तार में कंपन होता है, वो स्ट्रिंग जो स्टिक है वो हिलता है। तो ये चीज़ फ़र्क उनको समझ में आ गया, और बोल का कैसे हो रहा है वो नल तरंग से उन्होंने आइडिया लिया उसका। लेकिन जब भी मैं बजाना शुरू किया, शुरू में तो वो झाला दिया, वो तो सिंगल स्ट्रोक में चल रहा था, बोल भी दिया, ठीक है। जैसे ही मुझे गत में गया और मतलब स्वर में ठहराव के ज़रूरत था, तभी देख रहे थे कि वो उसका जो कंपन है वो आगे पीछे हो रहा है, मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो देन ही स्टार्ट फोकसिंग ऑन शिव जी, एंड ही उनसे भी बात किया कि ये क्या दिक्कत है, संतूर का क्या दिक्कत है इसमें। तो शिव जी के साथ बात करते हुए उन्होंने फिक्स किया कि उनका वीडियो रिकॉर्डिंग्स करेंगे सारे प्रोग्राम्स का। उन्होंने 10-12 ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स किया। आशीष खान साहब से बोल के उन्होंने हैंडी कैम बाहर से ले आए, उस ज़माने में मैं बोल रहा हूँ 86-87। तो वो लाके मैं कलकत्ता में जितने भी कॉन्सर्ट होता था शिव जी का, उनके बगल में स्टेज में बैठा रहता था, तो ऑब्ज़र्व करने के लिए, और वो वीडियो करके ले आके आते थे, और वो बैठ के वो देखते थे एंड उसके ऊपर शोध करते थे वो। उसके बाद उन्होंने मुझे पहले जो किया, मेरा पहला जो संतूर था वो नॉर्मल संतूर था। देन ही मेड दैट भार्गव जो है यहाँ पे भार्गव म्यूज़िक शॉप, वहाँ का जो वर्कशॉप है उसमें गुलाम मोहम्मद साहब को बुलाया कश्मीर से, और ही मेड अ स्पेशल संतूर फॉर मी। उसका शेप्स थोड़ा सा फ़र्क था उसमें, और ब्रिजेस का भी फ़र्क था, वो करके उन्होंने बनाया। और मुझे फिर मैहर ले गए, पूजा दिया, बाबा के मज़ार में भी वगैरह किया। वो सब करने के बाद मेरे हाथ पे दिया उन्होंने। लेकिन उसमें मुझे पहला मस्जिद का निगत उन्होंने सिखाया, और उसमें जब सिखाना शुरू किया, शुरू में शिव जी मस्जिद का निगत बजाते थे। 2 रिकॉर्डिंग्स ऐसे है रेफरेंसेस, लेकिन ऑडियो में, विजुअल नहीं है उसका। लेकिन वो थोड़ा लय बढ़ा हुआ है। हमारे घर में अति विलंबित बजाते हैं, मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए BPM, 40 BPM, उसके नीचे होता है कभी कभी। तो जब शुरू किया तो ठहराव को बढ़ाना था, तो उन्होंने जब वीडियो देखा तो उसमें देख रहे थे कि शिव जी के क्या है, वो मोर ऑन फीलिंग्स के साथ बजा रहे। तो बाद में उनको पता चला शिव जी के बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह से कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि सरोद या सितार के जो टेक्निक है उस टेक्निक से संतूर बजे। शिव जी के पिताजी वो चाहते थे कश्मीर का जो ओरिजिनल जो फॉर्म है उसी की तरह स्टाइल में बजे और संतूर। तो लेकिन मेरा तो सरोद और सितार के स्टाइल में ही सीखना था। तो इस समय उन्होंने एक एक करके पहले भैरवी में मुझे मस्जिद का निगत सिखाया, फिर अलाउद्दीन खान साहब का बंदिश सिखाया, द्रुतगत, वो 3 पाले का जो होता है वो सब सीखना शुरू किया। फिर झाला कैसे बजाना है, जैसे चिकारी जो है, चिकारी लेफ्ट हैंड में दिया, मतलब पूरा ट्यूनिंग जो है शिव जी से पूरा अलग हो गया मेरा, क्योंकि हमको खर्च के साथ तक जाना है नीचे, और ऊपर पंचम भी चाहिए, तो ट्यूनिंग मेथड्स भी पूरा चेंज हो गया। और शिव जी का स्ट्रिंग्स जो शुरू होता है लेफ़्ट साइड से, उसका पूरा बदल के राइट साइड से शुरू हुआ मेरा स्ट्रिंग्स, एंड चिकारी लेफ़्ट में आ गया, क्योंकि वो सितार जैसा होना चाहिए, डा चिक 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 बजेगा, मतलब डा रा 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 जो सितार में बजता है। और थोक झाला के साथ उल्टा हो जाता है, चिक डा 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 बजाएंगे। फिर उल्टी छला भी सिखाया, चिक डा रा चिक डा रा चिक डा रा चिक डा। लेकिन उसमें
डरा बजाने में थोड़ा दिक्कत होता था, तो उन्होंने कहा रबाबी अंग में बजाओ, चिक डडा चिडा डा करके, सिर्फ डा में जैसे बजाते हैं, सुर श्रृंगार का जो अंग है। तो ऐसे ऐसे करके डेवलप हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ, तो फिर पंडित जी का एक कंपोजिशन उन्होंने सिखाया मुझे बिहाग में, और उसमें पूरा चौताल का था, मैंने बजाया, वो परफॉर्म भी किया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये था, उसी दिन उनको बीमार पड़ गए वो, और वो सुन नहीं पाए। तो अमीना पेरेरा, उनकी बहन जो है, उन्होंने उसको रिकॉर्डिंग करके उनको सुनाया था जब हॉस्पिटल में जाके। तो जब सुनाया उन्होंने, तभी उन्होंने सबके सामने, घर के सब लोग थे वहाँ पे, कहे कि मैं तो दिशारी को पूरा सिखा नहीं पाया, बट ही गेट दैट फीलिंग जे कि वो चले जाएंगे। तो वो 11 अक्टूबर था, वो चले गए हमको छोड़ के। तो वो जो दिन था मेरे लिए लाइफ का सबसे दुखद दिन था। आज भी मैं उनके मज़ार में जाता हूँ, आई फील सो बैड, सॉरी, आई एम वेरी इमोशनल। सो जो भी है, तो उसके बाद तो ये हो गया, सब कुछ अंधकार हो गया, मतलब और कौन दिखाएगा। तो फिर पिताजी ने कहा कि फिर से शिव जी के पास ही चलते, और कुछ कर नहीं सकते। उस समय अली खान साहब आए, उन्होंने पिताजी को बुला के बोला कि दिशारी घर में जैसे रहता था वैसे रहेगा, और हम सब मिल के सिखाएँगे, कोई चिंता का बात नहीं, मैं जब आऊँगा मैं सिखाऊँगा, आशीष आएगा, आशीष सिखाएगा, बेबी है, सब मिल के सिखाएँगे, कोई चिंता का बात नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डेवलपमेंट चल रहा था धनेश खान जी का, वो जो भी वो डिसीजन ले रहे थे कि क्या बोल कैसे लेना है, दा दिरदारा बोल कैसे बजाएंगे, दिर दिरदा दिरदारा कैसे बजाएंगे, दार दादा कैसे बजाएंगे, तो ये सारे डिसीजन वो हमेशा वो अली खान साहब, अन्नपूर्णा देवी और पंडित जमीशंकर से कांटेक्ट में थे, वो बता के पूछ के करते थे। तो अभी क्या हो गया, जब वो गुजर गए, वो कांटेक्ट एकदम चला गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया। और आशीष खान साहब जब आए, तो मैंने जब फर्स्ट क्लास किया उनका, तो मुझे समझ में आ गया कि उनको कुछ भी पता नहीं संतूर के बारे में। तो मैं तो बहुत डर गया था, मतलब वो मुझे पूछ रहे थे तुम कैसे बजाते हो, तो मैंने पूरा सब कुछ दिखाया, गुरुजी ने क्या क्या सिखाया था। तो फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया, लेकिन पहले तो पूरे धाने से सिखाया, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं हुआ उतना। लेकिन जैसे पीलू में गए, 2 गंधार 2 निषाद आ गए, अभी वो बता नहीं पा रहे थे कौन सा गंधार कौन से साइड में बांधूँ, कौन सा ब्रिज में कौन सा ट्यून करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संतूर, कौन सा नोट कौन सा ब्रिज में ट्यून करना है और कौन सी श्रुति में ट्यून करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि श्रुति को अगर सही में ट्यून नहीं किया, वो बाद में मुझे पता चला, तो राग का रूप नहीं निकलता है उसमें, नहीं तो सब एक ही जैसा, पियानो में बजाना और संतूर में बजाना एक ही हो जाएगा फिर। तो अली खान साहब ने बहुत हेल्प किया मुझे उस समय। उन्होंने एक मशीन ला के दिया, वो ऑटोमेटिक, अभी जो जैसे ट्यूनर होते हैं आज के ज़माने में डिजिटल, वैसे एनालॉग ट्यूनर था, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था वो कॉर्ड के बॉस का एकदम काटा एनालॉग वाला। तो वो खुद बजाते थे वहाँ पे, घर पे बजा के, वो सारे मार्किंग कितने फ्रीक्वेंसी में कौन सा नोट्स आ रहा है, वाई आई एम मोर ऑन साउंड, इसकी वजह से मेरे उसी समय से, मैं छोटा जब था तब से साउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान था मेरा। सो आई एम स्लोली आई बिकम ए साउंड डिज़ाइनर। तो उन्होंने वो मेजरमेंट करके पूरा मैं नोट लिख के रखता था, कौन सा स्वर किस में बजाना है, कौन सा राग में। तो जैसे जैसे करते थे, वो लिस्ट मेरा पास था, उसके हिसाब से मैं उसको देख के मैं ट्यून करता था, क्योंकि कान में भी वो स्वर आना चाहिए ना, क्योंकि ट्यून करते करते दूसरा तार निकल जाता है, तो क्या होता है, मतलब उतर गया दूसरा, तो उसी में ट्यून करते रखते हैं। संतूर का ये दिक्कत है, आपका रेफरेंस बहुत हल्का सा इधर उधर हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स उतना डेवलप नहीं था, ये भी बहुत एक खामी था संतूर का। तो उसके बाद मैं सीखता रहा, लेकिन आशीष खान साहब के साथ मेरा कम्युनिकेशन एकदम नहीं जम रहा था ऐसे संतूर के साथ। तो वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे उस समय, और उनका मिजाज तो सबको पता है, उस समय तो और भी चढ़ा हुआ था और मैं डरा रहता था उनसे। और मेरा परिवार जो है इतना, मतलब मेरे गुरु व्यक्ति है, उन लोगों का फैमिली के साथ
वो मेरा समस्या समझ ही नहीं पा रहे थे मेरे फैमिली के लोग, और मदर भी गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर। मैं रोता रहता था पूरा दिन संतूर को लेके बैठ के। तो ये तो गुजर जाने के बाद वाला पिक्चर है। जब हाँ धनुष्का सब गुजर गए, आशीष खान सब जब मेरे जिम्मेदारी लिए, उन्होंने गांडा बांधा था मेरा, लेकिन उससे पहले गांडा नहीं बांधा था मैंने किसी धनुष खान साहब से। एंड थैंक यू फॉर चेंजिंग दैट। सो इसके बाद क्या हुआ, अलीबा खान साहब वो तो टाइम नहीं दे पा रहे थे उतना, तो जुबिदा खान को लगा कि अभी सही नहीं हो रहा दिशारी के साथ, तो उन्होंने पिशीमा को बोला, मतलब अमीना पेरेरा को, तुम थोड़ा उसका क्लासेस अलग से ले लो। तो अभी क्या हुआ, वो सरोज से सिखाते थे, उससे सितार में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आया मेरा, मुझे सुविधा हुआ, क्योंकि उसमें फ्रेट्स है, मैं थोड़ा समझ पा रहा था, क्योंकि फ्रेटलेस है ना, एकदम एक्सप्रेशंस नहीं समझ पा रहा था। तो सितार में मैंने उठाना शुरू किया। देन आई हैव टू, मुझे समझ में आ गया उनको भी संतूर पता नहीं, तो आई हैव टू लर्न सितार फर्स्ट। तो मैं 3 साल सितार सीखा उनसे पहले, सीख के फिर मैं वो सब चीज़ जो जो वो करते थे उसी को अप्लाई करके 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 संतूर में लेता था। और इस दौरान जब आशीष खान साहब ने भी बोला कि तुम सरूदी सीख लो, इससे अच्छा है, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हो संतूर में, इतना एनर्जी दे रहे हो, कोई बेकार हो जाएगा, तो तुम सरूदी कर लो। तो मुझे बहुत हर्ट होता था, मतलब अंदर से, क्योंकि आई वांट टू बिकम ए संतूर प्लेयर, नॉट ए सरोद प्लेयर। आई नो संतूर सरोद, आई लर्न इट, बट मुझे संतूर ही बजाना था। फिर मैंने सरोद सीखना शुरू किया। सो अभी सितारन सरोद ये चल रहा था ऐसे ऐसे। फिर वो ताल का जो हिसाब है हमारा घराने का, जो ध्रुपद अंग में जैसे बजता है बाज, तो जब भी मैं खमवाज बजाता हूँ या दूसरा राग बजाता हूँ, वो बोलते थे कि नहीं ये तो ख्याल जैसा हो रहा है, कभी ठुमरी हो रहा है, मतलब ध्रुपद अंग में नहीं आ रहा है। उस समय सच में मैं बोल रहा हूँ, पंडित शंकर घोष जी ने, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एज ए स्टूडेंट ऑफ अली अकबर खान साहब, उनके शिष्य थे, उन्होंने सरोद सीखा था उनसे, तो उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया उस समय। और वो बैठ के पखवाज के बोल वगैरह सब उठाया, मैंने सीखा वो सब। तो ऐसे करके करके फिर विनय भरतराम जी के पास गया मैं, क्योंकि गायन जो पद्धति है तो वो बिना मतलब सिंगर के वो नहीं हो सकता, मतलब वो सिंगर से ही उठाना पड़ता है, वो कैसे गा रहे उस टेक्निक को। तो मैंने उनसे गाने का तालीम लिया। फिर ऐसे ऐसे करते मतलब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स और इसमें चले गए बहुत ज़्यादा, मैं संतूर को छोड़ के बाकी सब सीख रहा था। मतलब आशीष खान साहब से एक चीज़ बहुत अच्छा मिला मुझे, मतलब वो आके ही पहले बोले कि तुम्हारा संतूर एकदम बेकार है, इसका साउंड सुनाई नहीं दे रहा, इसका तार चेंज करो, ये करो। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे तार को लेकर वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या हो गया, और बहुत तेज़ बजाओ, बहुत ज़ोर से बजाओ, बहुत, उससे क्या हो रहा था, मतलब टेक्निकली जो है मेरा बैलेंस ऑफ द स्ट्रोक वो बहुत पावरफुल हो रहा था, लेकिन सेंस ऑफ एस्थेटिक्स तो वो डेवलप कुछ भी नहीं हो रहा था ना, उससे तो म्यूज़िक वैसा थोड़ा ही ना है। तो अलीबा खान साहब जब उनको ये पता चला ऐसे हो रहा है, तब उन्होंने उस समय, मैं बोल रहा हूँ ये 95 का बाद, अमीना पेरेरा जी वो 6 महीने के लिए यूएस गए थे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा कि बाबा तुम्हारे लिए 12 मतलब मस्जिद खनीगत, फिर वज़ीर खनीगत, ऐसे ऐसे करके अलाउद्दीन स्टाइल सब वो 12 कंपोजिशंस अलग अलग राग में वो पूरा भेजे उठाने के लिए। तो वो सब जब मैं उठाने लगा, देन आई अंडरस्टैंड स्लोली कि ये कैसे बजता है। तो उससे थोड़ा फ़र्क आया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा था कि जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट में कुछ खामी है। देन आई स्टार्ट डेवलप माई इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो भी संतूर बजता है, कोई भी मतलब जितने भी नामी आर्टिस्ट को ले लो, सुनने में वो थोड़ा सा हल्का ही लगता है, मतलब वो इट्स नॉट साउंड लाइक ए जैसे क्लासिकल म्यूज़िक में होना चाहिए, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। तो मुझे हमेशा ये एक अंदर से एक चाहत था कि मेरा संतूर जब भी बजे तो लगे कि क्लासिकल के लिए बज रहा है, फर्स्ट स्ट्रोक से ही पता चल जाए कि ये मेड फॉर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, नॉट फॉर अ फोक इंस्ट्रूमेंट और ए रिकॉर्डिंग पर्पस संतूर। तो ये बेसिक चाहत था मेरा। तो इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह किया, एंड दुनिया में बहुत सारे संतूर का ऑप्शंस है वर्ल्ड में, तो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ।
एंड देन ये एक बहुत लंबा स्ट्रगल पीरियड रहा मेरा, मेंटली एंड फिजिकली। देन उस सबको कवर करते हुए मैंने लकीली मेरा संतूर जब बनाया, वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। नित्यानंद जी ने मुझे फ़ोन किया, मैं शॉप में था, तो फिर गुरुजी भी वहाँ पे थे उस दिन, मामा के पास आए थे। तो बोला तुमने कुछ संतूर बनाया तो लेके आओ। तो मैं शॉप से, वो तब ट्यून भी नहीं किया था पूरा, जैसे तार वगैरह सिर्फ लगाया, वो कंप्लीट करने के बाद मैं लेके आया घर में। तो माँ से मिला, प्रणाम भी किया, आशीर्वाद भी लिया। तो दिस इज सम कनेक्शंस, मतलब मुझे लगता है, मतलब मैहर के साथ भी है मेरा, बाबा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आई एम फील दैट कि दे विल गाइड मी हाउ टू प्ले। सो मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता आप लोगों को, तो थोड़ा समझ में आएगा मैंने कैसे कैसे एक्सप्लोर किया सरोद सितार को।
थँक्यू सो मच. थँक्यू सो या सेमिनारमधलं शेवटचे वक्ते आपल्या पुढे येणार आहेत. मिस्टर आंद्रे ड्रेगॉय यांच्याविषयी थोडीशी माहिती घेऊया आपण. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण कॅनडामध्ये झालं आहे, परंतु वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी ते आपल्या जन्मस्थानी म्हणजे रोमानियाला परतले आणि मनोचिकित्सक ही पदवी प्राप्त केली. त्यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये मनोरुग्ण निवास सुरू केलेला आहे. सध्या ते मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणून खाजगी प्रॅक्टिस करत आहेत. त्यांच्या किशोरवयीन काळापासूनच त्यांनी सुधारित संगीतावर लक्ष केंद्रित करून इलेक्ट्रिक बास आणि डबल बास या दोन्हीचा अभ्यास केला आहे. 1914 पासून ते पंडित नित्यानंद हळदीपूर यांच्याकडे बासरी वादनाचं शिक्षण घेत आहेत. लेट मी इन्व्हाइट मिस्टर आंद्रे ड्रेगॉय. प्लीज कम इन. I know that many very nice speeches and very elegant speeches have been presented tonight. And my paper, I'll try to summarize it as fast as possible, as concisely as possible, is called The Specificity of the Musical and Technical Aspects of Bansuri Playing in the MAIHAR GHARANA tradition. I would like to share perhaps 4 or 5 main points. The first one will be the general aspects and features of the Gharana, a subject that has been discussed in much detail already, so I don't think I will linger on that subject too much. Followed by the lineage and contribution of Panalal Ghosh. Thirdly, a comparative look at a few of its main components. And finally, the specific aspects and features of the Bansuri, such as blowing technique, aesthetics, specific patterns, phraseology, elements of the alap, and some notes on riyaz. So the general aspects, as we have spoken about today, as many other traditions, the MAIHAR GHARANA possesses key characteristics. They build its identity and lineage. So I won't linger on that part of the topic. We all know that it was founded by Ustad Alauddin Khan in the early part of the 20th century. And it has a very unique approach to vocal and instrumental music alike. It's a specificity of a Gayaki-influenced Gharana. And one aspect is the barakyal, which many of you have spoken about already, which is the presence of very lengthy stretches of development of the raga. They're performed in a very languid, prolonged tempo, vilambital. Other features are the syncretic approach that blends influences from different traditions, such as the Rampur, Gwalior, Senia Gharanas. Again, some of the salient features that many of you have touched upon are the katka, murki, zamzama, alankars, ornamentations, microtones, and rhythmic intricacies. Alap, bol alap, so on and so forth. So I won't repeat these aspects since you have heard them before. Also, we can note a blend of Western music style and instruments along with orchestral compositions. These aspects are also fairly common. An aspect of the phrasing, the phraseology, which could be considered the main contribution of Alauddin Khan, was a development of a circular phraseology that could start on different mantras of the Avartan, on the Sam, on the Kali, on the 7th mantra, 12th. And then the length of these phrases could be 1 or 2 cycles. So as far as Panalal Ghosh is concerned and his contribution to the lineage, we can note that his association with the Gharana and Alauddin Khan occurred in 1946. And then he had many disciples, some of them who are here as well, Pandit Nityanandji.
And then he had two main contributions for the Bansuri. The first one is quite the main and central element of the Bansuri is the addition of the seventh hole. And the seventh hole that would actually be played with the pinky finger directly as opposed to mechanical or pad-like extensions to the Bansuri. I will touch upon that subject a little later on. And finally, the second element is that he enhanced the size of the Bansuri from a smaller instrument mainly used in folkloric music to a classical instrument that could reach up to 42 inches in length. So one element that we can note is that the main exponents of the Gharana, of the Bansuri, of course, Pannalal Ghosh was there, Vijay Karnad, Gaur Goswami, Devendra Murdeshwar, Sajdev, Pandit Hariprasad Chaurasia, Pandit Nityanand Haldipur. So all of them had a very specific approach, very unique approach to their playing. And to summarize perhaps their differences and similarities, we can say that they're situated in 4 different areas. If we have to do a comparative summary, the first one we can call the innovators, which is Hariprasad Chaurasia, Murdeshwar, Karnad, and they had been considered for having an innovative approach and incorporating elements of various other styles and expanding the repertoire. And then a group of these musicians had a strict adherence to the classical repertoire and classical mood and style. Of course, Pannalal Ghosh, Nityanandji, Sajdev were putting the emphasis, are still putting the emphasis on the strict classical adherence and purity of the raga. And then strong pedagogical influences, such as Pandit Murdeshwar, Goswami, Karnad, Sajdev as well, were very known for carrying through the teachings in a very traditional manner. So I would like to talk about the specific aspects and features of the Bansuri. Some of these elements, many of you have talked about on your respective instruments, and then throughout the course of my studies with Pandit Nityanand Haldipur, this is how I retained and understood the didactic process and how it brought some clarity and understanding to myself. So as I was saying earlier, the primordial aspect is the use of the 7th Madhyam hole. And that approach is very much associated with a shift in the hand positioning, almost an anatomical shift, as opposed to the other traditions where the finger pads are used and the hands are held more like a silver flute or a classical flute. There is an internal, or rather external rotations anatomically of the 2 wrists, allowing for the holes to be articulated with the tip of the fingers as opposed to the phalanges. And once, well, I don't have my Bansuri here, but once you articulate the holes and the notes with the tip of the fingers, this rotation allows for the 5th finger to reach to the Madhyam hole, which is a primordial element in the approach of playing the Bansuri in this Gharana, since it opens up the blend of the lower, middle, and tar octaves as well, and creating more fluidity in certain ragas, such as Yaman, but basically any ragas who go from the Pancham to the Shuddha Madhyam, or even Ga. And this is allowed through this pivotal point, anatomical pivotal point. And it's quite difficult or challenging approach, as it implies an anatomical change, as I was saying, and people who are used to playing the Shinai approach with the phalanges, they might find it quite frustrating and time-consuming to rotate, to re-educate your touch and your muscles. Sometimes it could take up to 6 months or even 1 year. In my recollection, I think more than 1 year to feel at ease with
the fingering. And also, there are some specific blowing aesthetics that constitute the salient feature. And then some of them are long sustained notes. There is less staccato or tongue usage in the articulation of the Bansuri in this Panala gauche tradition, MAIHAR GHARANA tradition. And then the staccato is used mainly in the jala patterns. Prior to the jala, the sound is much more fluid, fluent, and lengthy, more like a river that flows, if you will. And then certainly the staccato part comes in the jala, and it would resemble like a woodpecker or a machine gun feeling. It's being articulated when the tongue touches the hard palate of the mouth, and then kind of meets that zone between the hard palate and the teeth, and it has different patterns, as Pandit Rupak was showcasing it earlier on, such as taka 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 taka, kata 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 kata. So there are many patterns, but they're mainly limited to the jala part of the composition. Some specific metric phraseologies are present. You have spoken about them already. 2 avartan structures, 1 avartan structure, and half avartan structures, and they could be subdivided in different mathematical compositions, such as 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, or 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, so on and so forth. So these are just basic building blocks that create the vocabulary, as you already know. So now a few words on the alap, which is the central piece of the raga, which is, as many of you said already, developed and influenced by the Drupad tradition. It is slow, bold, and it's rendered with an attribution of clarity and purity. Its slowness should convey a meticulous and focalized, unrushed mood. At the same time, you have to be wary. You do not have to be too slow and become sluggish in the rendition, because in this case, the coherence and identity of the raga could be lost. As a guiding point, we can say that to convey an appropriate rasa to the rag, the speed or the baseline pulsation could be considered to be the equivalent of the time that is required for the na on the tabla to fade out from your auditory spectrum. And of course, Ma Annapurna Devi, as I have come to understand, was emphasizing that within the first 10 seconds or so of the presentation of the rag's identity has to be placed in front of the listener's ears and his imagination or her imagination. And of course, because each raga has a definitive personality, a defined personality and traits, and to reach this point, perhaps the musician, at least on the Bansuri, has to define the tonic note, the sa, and in a way, its resonance and exploration, which could last for 15, 30 seconds as a long sa at the onset of the performance, has 2 effects. The first one is to calm the nervous system through the breath and activation of the vagal nerve, but also it creates a series of overtones, which is probably more subtle and more theoretical that to consider that who will be able to exemplify and integrate the rest of the notes in this first lengthy sa. So it's very subtle, but perhaps mentally and the imagination part has to tend towards that. What to say, the alap's construction and development is very gradual and widening, such as a snake. If you will, its visual representation could be that of a kaleidoscope. It may be rearranged as per the musician's imagination and creativity. And
of course, the alabol, each note is added in an orderly sequence. Pandit Desai has spoken about this approach as well. And however, to make it coherent, the note and the direction of the expressivity of the music has to be imagined rather than rendered in a haphazard and destructured approach. So everything is almost premeditated and thought out instantaneously. Hence, perhaps the instantaneous composition or improvisation of this music. Of course, the moria is there, and which is this after the establishment of the tonic note of the very beginning of the alap, all the subsequent returns present this blowing pattern that is actually an image of the expression of a short mantra, which is, if I'm not mistaken, Om Shri Anand Hari Narayan. And then this mantra and this moria is basically part of the grammatical language of the artist and of the alap as well. And it can be subdivided in 5 different segments, either 5 breaths or 5 notes at once, or 2 plus 3 or 3 plus 2. It depends really on the mood and feeling of the rag and of the musician. And one important aspect of this moria is that it has to be rendered when the alap is being constructed around the mandra and madhya saptak. Once you go up to the tar saptak, the moria is no longer present. You just hold out the sa of the tar saptak, or you come back down to the lower octaves. A few notes on riyaz, which I find quite important and fascinating at the same time. So obviously it should be executed and performed regularly, and the ideal time for the riyaz, as perhaps for many contemplative or meditative approaches, has to occur in the so-called Brahma Muhurta time of the day, which is between roughly 4 and 5:30 a.m., which is considered to be a very silent moment in the universe, or perhaps in our minds as well, hopefully. So in accordance to which raga one happens to be working, the notes should be there, the chalan should be played, and the sequence of notes, either a linear or asymmetric, like the Vakra ragas, should be practiced for about 1 hour a day as a basic building point to warm up the instrument, the fingers, and integrate the identity of the raga as well into our bodies and imagination. So that pretty much sums it up. Perhaps the last point that I could add, besides the ones that have been touched upon, is that the importance of having a direct guide or teacher, guru, is quite important, as there are very specific microtonal attributions to the svaras, and such as in Rag Shri, the Rishab is slightly atikomal. In Purya Kalyan, it sits right in the middle of the between the Sam and the Rishab, and then Marva is slightly sharper. So these subtleties people would either miss or misunderstand or not hear at all. So the importance of having a direct guidance and supervision, perhaps, it's always quite very important. One last point is the longevity of the practice of each given raga, which might be quite obvious for many of you who have been practicing and playing for a lifetime, is that the length of time that is needed for a composition or rag to enter our bodies, or physical and emotional bodies. And usually at least 30 days up to 6 months would be advised to keep on practicing without any haste, and with a lot of redundant patience, and certainly a form of abstinency.
That sums up my impressions and the contents of my paper. And I do thank everyone, Nityananji, Ma, who's no longer. Thank you very much. धन्यवाद. यानंतर इथे एक छोटासा पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम होईल. मी पंडित नित्यानंद हळदीपूर, श्रीयुत सुरेश व्यास, हेमंत देसाई, पंडित रूपक कुलकर्णी आणि श्री अनिंद्य बॅनर्जी यांना व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो. यानंतरच्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करण्यासाठी मी श्रीमती मुग्धा बापट यांना आमंत्रित करतो. आत्ताच जे पुस्तक प्रकाशित झालं ते श्रेयाने सांगितल्याप्रमाणे बाहेर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. अत्यंत माफक शुल्कामध्ये 200 रुपयामध्ये ते अवेलेबल आहे. तरी जाताना प्रत्येकाने ते न्यावं अशी विनंती. या पुस्तक प्रकाशनानंतर या पुस्तकात ज्यांनी लेख लिहिलेले आहेत अशा सर्वांचे आपण ट्रस्टच्या वतीने आभार मानणार आहोत ट्रॉफीज आणि सर्टिफिकेट्स देऊन. तर ते ट्रॉफीज आणि सर्टिफिकेट आपण देणार आहोत. ह्यामध्ये ज्यांनी लेख लिहिलेत त्यांनी सुरुवातीला आपण सुरुवात करूया पंडितजी नित्यानंद हळदीपूर यांच्यापासून. मी पंडितजींना विनंती करते की त्यांनी ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट घेण्यासाठी थोडं पुढे यावं आणि श्री प्रदीप वेलणकर यांनी त्यांना ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट द्यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. याच्यानंतरची जी सगळी ट्रॉफीज आणि सर्टिफिकेट्स द्यायची आहेत ती आपण पंडित नित्यानंद हळदीपूर यांच्या हस्ते देणार आहोत. म्हणून मी पंडितजींना विनंती करते त्यांनी पुढे यावं. श्री सुरेश व्यास, पंडित रूपक कुलकर्णी, श्री अनिंद्य बॅनर्जी, श्री दिशारी चक्रवर्ती, डॉक्टर पौर्णिमा धुमाळे, सौ संध्या आपटे, सौ रश्मी चक्रवर्ती, डॉक्टर आंद्रे ड्रेगॉय, आजच्या सत्राचं सकाळपासून ज्यांनी सूत्रसंचालन केलं असे मिस्टर प्रदीप वेलणकर आणि सौरजनी वेलणकर यांच्याबद्दल मी तुम्हाला थोडंसं सांगते. आपण सगळेजण त्यांना ओळखताच. व्यावसायिक रंगभूमीवरती अभिनेता म्हणून गेली 50 वर्षांहून जास्त काळ कार्यरत असणारे ख्यातनाम कलाकार, दूरदर्शन, TV मालिका, मराठी आणि हिंदी चित्रपट, जाहिरात क्षेत्र तसंच आकाशवाणी अशा सर्व क्षेत्रात सातत्याने महत्त्वाची भूमिका बजावणारे श्री प्रदीप वेलणकर यांनी आता ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट घेण्यासाठी पुढे यावं. रजनी वेलणकर यांच्याबद्दल तोपर्यंत सांगते. त्या अशाही त्यांच्या अर्धांगिनी आहेत ते येईपर्यंत. व्यावसायिक नाटक, सिनेमा, दूरदर्शन याचबरोबर मुलांसाठी 12 एकांकिकांचं लेखन, सादरीकरण आणि दिग्दर्शन
नाट्य शिबिर आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचं आयोजन अशा अनेक आघाड्यांवर उत्तम काम करणाऱ्या रजनीताई वेलणकर. काही गोष्टींच्या सूचना करण्यासाठी मी आता इथे आहे. आचार्य अलाउद्दीन म्युझिक सर्कल आणि अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन प्रस्तुत शास्त्रीय संगीताची मैफिल आणि गुरुसन्मान उद्या आणि परवा म्हणजे शनिवारी 7 तारीख आणि रविवारी 8 तारीख या दोन्ही दिवशी बालशिक्षण मंदिर स्कूल कॅम्पस मयूर कॉलनी इथल्या MES ऑडिटोरियममध्ये संध्याकाळी 4:30 वाजता आयोजित केलेला आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे, परंतु पुन्हा पुन्हा आठवण करून दिली म्हणजे मग सगळ्यांच्या नीट लक्षात राहतं आणि लोक वेळेवर तिथे येतात. वेळेत आलेत की वेळेत कार्यक्रम सुरू करता येतो. उद्याच्या कार्यक्रमामध्ये पंडित अनिंद बॅनर्जी यांचं सूर सिंगार आणि सरोदवादन आणि विदुषी श्रुती सडोलीकर काटकर यांचं गायन प्रस्तुत होईल. त्याचबरोबर गुरुसन्मान पुरस्कार दिला जातो, तोही उद्या प्रदान केला जाईल. पंडित हृदयनाथ मंगेशकर आणि विदुषी ललिता राव यांना तो दिला जाईल. आपण सर्वांनी उद्याच्या कार्यक्रमासाठी नक्की यावं अशी मी आपल्याला विनंती करते आणि आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला असं जाहीर करते. पण तत्पूर्वी 2 सूचना आहेत. एक म्हणजे ज्यांना सर्टिफिकेट्स घ्यायची आहेत त्यांनी ते आठवणीने घेऊन जावीत, बाहेर काउंटरवरती आहेत. आणि दुसरी महत्त्वाची सूचना म्हणजे बाहेर चहापानाची व्यवस्था केलेली आहे, त्याचा सगळ्यांनी जरूर आस्वाद घ्यावा. आज उपस्थित राहिल्याबद्दल आपलं आणि खूप मौलिक माहिती आपल्यापर्यंत पोचवल्याबद्दल सर्व वक्त्यांचे मनापासून खूप खूप आभार. जाता जाता एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की उस्ताद आशिष खान साहेब जे बाबांचे शेवटचे शिष्य होते त्यांचं 15 नोव्हेंबरला देहावसान झालं, आपल्याला माहिती आहे. त्यांना आपण सर्वांनी 1 मिनिट उभं राहून श्रद्धांजली वाहूया. ओम शांती.